Hello friends. Now friends, today we will see the first lesson of class 1. That is, what's that noise? And today we will do the reading practice of this lesson. So let's start and let us see lesson number 1. What's that noise? Okay, what's that noise? What's that noise? Tweet, 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 tweet. Who is tweeting? Who is tweeting? Who is tweeting? Now friends, you have to repeat after me. Tweet, tweet. Who is tweeting? It is not the fish. It is not the fish. It is not the fish. It is the bird. It is the bird. It is the bird. Okay, one more time. Tweet, tweet. Who is tweeting? It is not the fish. It is the bird. Let's see the next paragraph. Woof, woof. Who is barking? Okay, woof, woof. Who is barking? Woof, woof. Who is barking? It is not the monkey. It is not the monkey. It is not the monkey. It is the dog. It is the dog. It is the dog. Okay, so let's see one more time. Woof, woof. Who is barking? It is not the monkey. It is the dog. It is the dog. Ba, ba. That is a very loud ba. That is a very loud ba. That is a very loud ba. Is it the cow? Is it the cow? Is it the cow? No. It is the sheep. Friends, you have to repeat after me. No, it is the sheep. No, it is the sheep. Ba. That is a very loud ba. Is it the cow? No, it is the sheep. No, it is the sheep. Now, what's that noise? Okay. Now, what's that noise? Now, what's that noise? Is it the bird? Is it the bird? Is it the bird? Is it the dog? Okay, is it the dog? Is it the dog? Is it the sheep? Is it the sheep? Is it the sheep? No, it is father. No, it is father. Okay, no, it is father. He is fast asleep. He is fast asleep. He is fast asleep. He is snoring. He is snoring. He is snoring. So, zzz, zzz. Who? Now, what's that noise? Is it the bird? Is it the dog? Is it the sheep? No, it is father. He is fast asleep and he is snoring. So friends, this is how you have to read the first lesson, that is, what's that noise? Okay. Now, repeat this video friends 2-3 times and do the reading practice of this lesson, what's that noise? In the next video,
we will learn this lesson. Okay, so thank you very much. So hello friends, आज हम देखने वाले हैं द वेरी फर्स्ट लेसन ऑफ फर्स्ट स्टैंडर्ड इंग्लिश, दैट इज लेसन नंबर 1, व्हाट्स दैट नॉइस। ओके, हमारे लेसन का नाम है व्हाट्स दैट नॉइस, यानी फ्रेंड्स वो नॉइस, वो आवाज, आवाज क्या है। सो लेट्स स्टार्ट विद द लेसन। ट्वीट ट्वीट, हु इज ट्वीटिंग? It is not the fish, it is the bird. Now see friends, in this picture, if you see यहाँ पे एक गर्ल बैठी है और उसे विंडो से फ्रेंड्स बाहर से कुछ आवाज आ रही है और वो नॉइस क्या है? ट्वीट ट्वीट। सो ट्वीट ट्वीट, ओके, हु इज ट्वीटिंग? वो गर्ल पूछती है कि ये जो ट्वीटिंग की साउंड है ये कौन निकाल रहा है? क्या वो फिश है? सो नो, it is not the fish. Tweeting friends bird कर रही हैं, so it is the bird. Okay, birds जो sound निकालते हैं उसे हम क्या बुलाते हैं? Tweeting. So it is the bird who is tweeting. Then again, woof woof, who is barking? It is not the monkey, it is the dog. अगेन उस गर्ल को कुछ नॉइस सुनाई देती है और इस बार वो नॉइस कौन सी है? वुफ वुफ। सो इस नॉइस को हम बुलाते हैं बार्किंग। सो हु इज बार्किंग? सो सी, इज इट द मंकी और इज इट द डॉग? यानी मंकी वुफ वुफ कर रहा है या डॉग वुफ वुफ कर रहा है? सो इट इज नॉट द मंकी, इट इज द डॉग। ओके, मंकी वुफ वुफ नहीं करता, डॉग वुफ वुफ कर रहा है और डॉग के इस साउंड को हम क्या बुलाते हैं? बार्किंग। सो इट इज द डॉग हु इज बार्किंग। ओके, रिपीट आफ्टर मी, इट इज द डॉग हु इज बार्किंग। सो डॉग का ये जो वुफ वुफ साउंड है इसे हम क्या बुलाते हैं? बार्किंग। सो यह हमारे सेकेंड नॉइस। फर्स्ट नॉइस थी ट्वीटिंग, सेकेंड नॉइस थी वुफ वुफ, दैट इज बार्किंग। Ba. Okay, ba. That is a very loud ba. Is it the cow? No, it is the sheep. Now again हमें एक साउंड सुनाई देता है, that is ba, और a very loud ba, एक बहुत ही बड़ा बा है, जैसे ba. So is it the cow who is making this sound or is it the sheep who is making this sound? तो ये साउंड कौन बना रहा है? क्या वो काऊ बना रही है, काऊ से आ रही है या शिप से आ रही है? सो इट इज नॉट द काऊ, इट इज द शिप। ओके, काऊ फ्रेंड्स बा साउंड नहीं बनाती, वो साउंड कहाँ से आ रहा है? शिप से आ रहा है। ओके, तो सो फ्रेंड्स, इट इज द शिप हु इज मेकिंग अ वेरी लाउड बा। ओके, सो ये हमारा थर्ड साउंड है, दैट इज बा बा। और एवरीवन ऑफ अस नोज दैट कि बा बा साउंड कौन निकालता है? ऐसा साउंड सिर्फ शिप निकालती है ना। Now what's that noise? Is it the bird? Is it the dog? Is it the sheep? No, it is father. He is fast asleep and he is snoring. Now again इस गर्ल को, if you see in this picture, और एक नॉइस सुनाई देती है और वो नॉइस क्या है? तो ये इस नॉइस कौन निकाल रहा है? तो क्या ये नॉइस बर्ड निकाल रहे हैं? इज इट द बर्ड और इज इट द डॉग? क्या ये साउंड डॉग निकाल रहा है? और इज इट द शिप? क्या ये साउंड शीप निकाल रही है? सो नो, इट इज द फादर। ओके, इस गर्ल के जो फादर हैं वो ये साउंड बना रहे हैं। ही इज फास्ट अस्लीप।
फास्ट asleep का मतलब है वो बहुत ही गहरी नींद में है. ओके, एंड ही इज स्नोरिंग. वो क्या कर रहे हैं? वो स्नोरिंग यानी खराटे ले रहे हैं, और ये उनके खराटों की आवाज है यानी स्नोरिंग की आवाज है. सो दिस वॉज द लेसन व्हाट्स दैट नॉइज. और यहाँ हमने 4 नॉइसेस देखी. पहली नॉइस थी ट्वीट ट्वीट, जो बर्ड निकाल रहे थे. सेकेंड नॉइस वॉज वूफ वूफ, दैट इज बार्किंग, जो डॉग निकाल रहा था. देन बा, देन बा, ओके, अ वेरी लाउड बा, ये साउंड निकाल रहे थे शिप. और इसके बाद ये साउंड कौन बना रहा था? फादर, बिकॉज फादर ही इज स्नोरिंग, यानी वो खराटे ले रहे थे. So friends, this how we have completed our first lesson, that is what's that noise. Okay, in the next video we will see a new lesson of class 1 English. So thank you.